All right, we're shifting focus to the other big political story we're tracking. Mehbooba Mufti was meeting with Governor N.N. Vohra. That meeting has in fact ended. Mehbooba Mufti there on your screens, likely to be speaking to the media anytime now. Let's listen. The meeting, it was a very crucial meeting. It was a very informal meeting थी. आज जो गवर्नर साहब ने हमें बुलाया था वो कोई रस्मी बातचीत नहीं थी, इनफॉर्मल मीटिंग थी. क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, they have thrown a very, you can say a decisive but at the same time a very divided mandate. Decisive भी है but at the same time divided mandate भी है. और ऐसे में जो गवर्नर साहब खुद ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम, बहुत दानिशमंद है. हम खुद कैसे होगा बाबा? ठीक है, ठीक है, प्लीज. Is it okay now? Is it okay? See, please, I have a flight to catch. मुझे वापस जाना है, इसलिए अगर आप बात सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अगर नहीं सुनना चाहते तो फिर प्लीज या क्वाइट. अब कोई नहीं बोलेगा प्लीज. आज प्लीज खामोश हो जाइए. आज गवर्नर साहब ने हमें बुलाया था एक इनफॉर्मल डिस्कशन के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी हाली इलेक्शन हुए हैं, the elections have thrown a very decisive but at the same time a very divided mandate. जहां कश्मीर में पीडीपी को अक्सरियत मिली है, वहां जम्मू में बीजेपी को अक्सरियत मिली है. और ऐसे में जहां गवर्नर साहब से हमने अपने बातें बताई कि अगर जैसे मैंने पहले दिन भी कहा था कि पीडीपी's priority is not to cobble up a majority for the sake of government formation, कि हम जल्दबाजी में मिलके सब सरकार नहीं बनाना चाहते. अभी एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स जो आप लोगों ने भी सुना, सरकार नहीं बनाना चाहते. अभी एज पर द मीडिया रिपोर्ट्स जो आप लोगों ने भी सुना होगा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, इंडिपेंडेंस है, एज अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स पीडीपी के पास इस वक्त मोर देन 55 MLAs का सपोर्ट है, विच इज मोर देन इनफ कि अगर सरकार बनानी हो. मगर क्या सरकार किस लिए बनानी है? जम्मू कश्मीर के लोगों का जिसमें वेलफेयर होगा, जिसमें सब रीजन्स की एस्पिरेशंस अकोमोडेट होंगी, जिसमें खासकर पीडीपी का जो अपना एजेंडा है पॉलिटिकल प्रोसेस को लेके, जिसको वाजपेयी जी ने इनिशिएट किया था, उसको आगे चलाने की बात है. जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की बात है, एस्पिरेशंस को मीट करने की बात है, और जो भी इश्यूज हैं, डायलॉग की बात है. ये सारी चीजें जिस फॉर्मेशन में हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का वेलफेयर होगा, जम्मू कश्मीर में पीस और रिकंसिलिएशन का एटमॉस्फेयर, बिकॉज यू कैन नॉट हैव डेवलपमेंट विदाउट द हैविंग अ पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑन द ग्राउंड. उसके लिए जो वाजपेयी जी ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस इनिशिएट किया था 2003 में, पाकिस्तान के साथ सीज फायर वाजपेयी जी ने किया था. जम्मू कश्मीर में डायलॉग वाजपेयी जी ने शुरू किया था अनकंडीशनल हुर्रियत वालों के साथ. जब LK अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत शुरू हो गई थी. और उसके अलावा बहुत ही जनरस से मिले थे उस वक्त वाजपेयी जी ने. तो कहीं ना कहीं यूपीए सरकार ने उस प्रोसेस को थोड़ी देर आगे चला के उसको बंद कर दिया. और आज हम चाहते हैं कि जब पीडीपी जो भी फॉर्मेशन में जाए, अगर उस फॉर्मेशन में जो जम्मू कश्मीर का जो पीडीपी का, इट्स नॉट पीडीपी's पॉलिटिकल एजेंडा. लेट मी टेल यू वन थिंग, जो आज का मैंडेट है, it is very challenging, but at the same time this is also a great opportunity for the leadership of our country, both for NDA as well as the Congress leadership. अगर इतना मैंडेट जिसमें कश्मीर के लोगों ने इतनी भारी अक्सरियत में पहली बार वोट डाला, अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है, जो एनडीए की सरकार है उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, मोदी जी पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है.
because Kashmir has always been the biggest challenge for any Prime Minister, right from Jawaharlal Nehru till date. تو میں سمجھتی ہوں آج کا مینڈیٹ is not only a challenge, it's also an opportunity for the whole country کہ they should reach out to the people of Jammu and Kashmir. جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو بھی آگے چلنا چاہیے تاکہ جو ڈیولپمنٹ کا جو خواب ہے جو مودی جی بار بار کرتے ہیں, جو جموں کشمیر کے لوگوں کو چاہیے, ان ایمپلائمنٹ کو دور کرنا ہے, ڈیولپمنٹ کرنی ہے, بٹ دیٹ از ناٹ پاسبل انلیس اینڈ انٹل جو واجپئی جی کا ایک پولیٹیکل پروسیس چلا تھا, جو پی ڈی پی کا ایک ایجنڈا ہے, جو جموں کشمیر کا ہی نہیں میرے خیال میں پورے کنٹری کا ایجنڈا ہونا چاہیے, جب تک اس کو بھی ہم ساتھ لے کے نہیں چلے مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کا بننا فضول ہے. What is stopping you from joining hands with BJP right now? What is stopping you from joining hands with BJP? The BJP is also there. Okay, as I said earlier, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا, آج کا جو مینڈیٹ ہے it is very challenging but also it's a great up. تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کے جو حالات ہیں, جو جموں کشمیر کی سمسیا اس کا سمادھان بھی ہوگا اور جموں کشمیر will truly become a model جس کا 1947 میں جب ہمارا ایکسیشن ہوا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا تھا جموں کشمیر will be a showcase window for the whole world to gaze at, and I think اگر ہمارے ملک کی لیڈرشپ if they rise to the occasion and take this mandate head on and address the alienation of the people at Jammu and Kashmir, اس کے بعد یہ سرکار بنانا بڑا آسان ہے 15 منٹ میں. What is stopping PDP from joining hands with BJP? What are the issues of contention with? It is not about BJP or NC or Congress. ہمارا یہ ہے کہ جو بھی فارمیشن ہونا چاہیے پہلے تو ریسپیکٹ ہونا چاہیے مینڈیٹ کا, دوسرا ریسپیکٹ ہونا چاہیے جو جموں کشمیر کے سمسیا کو لے کے جو ایک ریکنسیلیشن کا ایک پی ڈی پی کا ایجنڈا جو پورے ملک کا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح سے پورا ہوگا. کیا این سی کانگریس پی ڈی پی مل کے وہ فارمیشن ہو سکتا ہے, کیا بی جے پی این سی وہ کر سکتے ہیں یا بی جے پی یا ہماری جماعت کر سکتے ہیں, یہ ڈیلیبریشن کی بات ہے. مگر بیسک مدعا یہ ہے کہ آج کا جو مینڈیٹ ہے اٹس اے چیلنج, بٹ آئی آلسو لک اٹ ایز این اپارچونٹی ناٹ اونلی فار دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر بٹ فار دا ہول کنٹری فار دس. BJP is ready to climb down on the issue of Chief Minister. That was PDP Chief Mehbooba Mufti talking about the fact that Jammu and Kashmir has got a decisive but at the same time a divided mandate from the people of Jammu and Kashmir. It was an informal meeting that she had with NN Vora, the governor of Jammu and Kashmir. She has said that she's not going to go and conjure up a government in a haste. It is about development and meeting the aspirations of the people of Jammu and Kashmir. Interestingly, Mehbooba Mufti also talking about former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and the political process that he had in fact initiated, and how she does believe that the political parties need to come together to in fact realize the vision that he had for the state of Jammu and Kashmir. What we're giving to understand at this point in time is that she has had an informal meeting with the governor at Raj Bhavan. She has not submitted any kind of blueprint for government formation yet, as was the speculation initially. Mehbooba Mufti has said that she has updated the governor on what the plans of the PDP are. She says that with the Congress and the NC, they have 55, the support of 55 MLAs. Talking about an alliance with the BJP, she says that it is about political ideology, it is about putting together a political process that will help in realizing the dreams and aspirations of the people of Jammu and Kashmir. It is about development. Also invoking the name of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, she says that political parties need to come together to in fact realize his vision for the state of Jammu and Kashmir. It does appear that the limbo on government formation in Jammu and Kashmir is going to continue, as this was in fact an informal meeting that Mehbooba Mufti did have with the governor. No official blueprint for government formation or a coalition in Jammu and Kashmir has been submitted so far. We're going to